Hello my dear students, today we are going to discuss the numerical problems of the chapter magnetic field due to electric current. Okay, we will discuss the textbook problems which are unsolved. Solved problems you can see and understand for yourself. Okay, I advise that once you understand, then you try to solve the problems on your own, and also you try to attempt some more unsolved problems for other sources. Okay, so let us start discussing the problems from the exercise. Okay, let us first discuss problem number 3 from the textbook, page number 249. Okay, it says calculate the value of magnetic field at a distance 2 centimeter from a very long straight wire carrying current of 5 ampere. Okay, so हम लोगों को दिया हुआ है एक very long स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से जो करंट है दैट इज 5 एम्पेयर. हमको एक पॉइंट दिया हुआ है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. दिस इज पॉइंट पी, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. हम लोगों को यहाँ पे इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डिस्कस करना है. ओके, सो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो सिस्टमेटिकली लिखना भी जरूरी है. व्हाट इज गिवन दैट करंट इज इक्वल टू व्हाट 5 एम्पेयर्स एंड डिस्टेंस r जो कि यूज किया है टेक्स्ट बुक में, दैट r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर्स. ओके, नाउ हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव? फॉर्मूला इज B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2 पाई r. क्लियर? अब हम लोगों को μ0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू पता है, इसलिए क्या कर देंगे, इसको छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे. 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? सो हम लोगों को मिलेगा μ0 इंटू 2 पाई अपॉन 4 पाई r. सो नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. μ0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू इज 10 टू द पावर ऑफ -7. This into 2 into what is the value of I? I is 5 amperes upon what remains now? R. Now R is equal to what? 2 into 10 to the power of -2. So this is equal to 2 will cancel. 5 into 10 to the power of -5 magnetic field. So Tesla. Okay. टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है that is wrong, क्योंकि क्लियरली दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. वेरी लॉन्ग है, इनफाइनाइट लेंथ है, सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. अगर फाइनाइट लेंथ होता तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया होता μ0 I अपॉन 4 पाई r. ओके, बट मतलब इसका हाफ कर देते हम लोग, लेकिन इट इज क्लियरली गिवन, क्लियरली स्पेसिफाइड दैट इट इज अ वेरी लॉन्ग कंडक्टर, तो यही करना होगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन. सो समझने के लिए अगर टाइम लगता है सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड अंडरस्टैंड. ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 4. व्हाट द फोर्थ प्रॉब्लम सेज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power of -7 मीटर पर सेकेंड. ओके, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन. कितना है? 3 into 10 to the power of -7 meter per second. Then in a magnetic field 6 into 10 to the power of 4 Tesla. Okay, so B is given. B is equal to what? 6 into 10 to the power of 4 Tesla. Then and the magnetic field is perpendicular to its path. What will be the radius of the path? तो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है भाई, रेडियस कितना है, एंड देन वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी. ओके, फ्रीक्वेंसी कितना है, एनर्जी कितना है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. नाउ वी नो that when an electron or for that matter any charged particle moves with some velocity perpendicular to the magnetic field, it traces a circular path. Okay, now इस circular path का जो radius है, that radius
चाहे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करो या कैपिटल R से, दैट रेडियस इज इक्वल टू व्हाट mv अपॉन q इनटू b। क्लियर? नाउ हम लोगों को ये सारी वैल्यूज पता है। द इलेक्ट्रॉन इज देयर, मास इज इक्वल टू व्हाट 9.1 into 10 to the power of minus 31, लेकिन प्रॉब्लम में जो दिया है वही लेना होगा। प्रॉब्लम में दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 into 10 to the power of minus 31, तो यही लेंगे हम लोग, 9 into 10 to the power of minus 31 into velocity is given 3 into 10 to the power of minus 7 upon charge on electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19। यहाँ पे कितना दिया है ये एक बार कंफर्म कर लेंगे। yes it is given the same। ओके अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है दैट इज 6 into 10 to the power of 4 or 10 to the power of minus 4, there is some confusion, 10 to the power of I think minus 4, so 10 to the power of minus 4, so B is equal to 6 into 10 to the power of minus 4। so क्या करोगे, we will just calculate these things, 9 into 3 that is 27, या फिर एक काम करो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 is 6, so what remains 9 into ये क्या हो जाएगा 10 to the power of minus 31, 10 to the power of minus 7 that is 10 to the power of minus 38 upon 1.6 into 2 that is 3.2 into 10 to the power of minus 23। ओके, सो इसको हम लोग क्या करते हैं, 9 by 3.2 into 10 to the power of minus 38 से minus 23 गया minus 15। ओके, सो नाउ 9 by 3.2 हम लोग सॉल्व कर देंगे। लॉग यूज करने की इसके लिए कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज इजी। ओके, 32 2s are 64, so 26.3 8s are 256। okay, so this is 2.81, so this is equal to 2.81 into 10 to the power of minus 15 meters। this is the radius of the circular path that is traversed by the electron। okay, now इसके बाद हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, we have to calculate frequency and energy। okay, now we know that the formula for time period is equal to what, formula for time period t is equal to 2 pi m divided by qb। okay, so therefore frequency will be equal to what, qb upon 2 pi into m। clear? so ये values हम लोग लिखेंगे। so frequency f is equal to qb, q का वैल्यू कितना है, 1.6 into 10 to the power of minus 19 into b is what, 6 into 10 to the power of minus 4 upon 2 into 3.14 into mass is given 9 into 10 to the power of minus 31। clear? so this is 2 3s are 6s, 3 3s are 9, so क्या मिलता है हम लोगों को, 1.6 न्यूमरेटर में अपॉन दिस इज इक्वल टू व्हाट, 9.42 ये वाला, अब इनटू 10 टू द पावर ऑफ minus 19 minus 4, so minus 23, डिनोमिनेटर में कितना है, minus 31। क्लियर? सो 23 31 मतलब डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर ऑफ minus 8, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बी 10 टू द पावर ऑफ plus 8। क्लियर? सो 1.6 अपॉन 9.42, इसको क्या कर दोगे, दोनों डेसिमल पॉइंट्स निकालो, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट, नो नीड ऑफ यूजिंग द लॉग टेबल। सो दिस इज 160 अपॉन 942। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट देंगे, 9 1 942, 8 5 6, six। okay, how much remains, 8
9,280. So it will be 9. Okay. So the answer is 0.169. No, this is equal to 0.169 into 10 to the power of 8. इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 to the power of 8 है ना, so इसको 10 to the power of 6 करना चाहते हैं हम लोग. क्लियर, मतलब 10 to the power of 2 100 से इसको मल्टीप्लाई कर डालेंगे, so ये कितना हो जाएगा 16.9 into 10 to the power of 6. फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज. अब 10 to the power of 6 hertz, 10 to the power of 6 is what, mega. So therefore this is equal to 16.9 megahertz. This is the frequency. Clear? Next one is energy. He is asking us to calculate the energy. See, there are some errors in the answers that are given in the textbook, that is creating a lot of confusion in the minds of the students. Okay, what we are finding out is the correct answer. Now he is also asking us to calculate the energy. Now you know that energy is equal to what, half of m into v square. Okay, mass of the electron into velocity of the electron. Okay, now this is equal to what, half of m. What is the mass? Mass is given, that is 9 into 10 to the power of minus 31 into velocity is given, that is 3 into 10 to the power of minus 7 isca square. So this is equal to half of 9 into 10 to the power of minus 31 into isca square is 9 into 10 to the power of isca square is minus 14. Okay, so this is equal to 9 9s are 81 divided by 2. So this is 40.5 into 10 to the power of, ये कितना हो जाएगा, minus 31 minus 35 minus 45 joules. Okay, so this is the energy of the particle. या फिर हम लोगों को दूसरा एक फार्मूला भी दिया हुआ है एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी इज इक्वल टू q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. ओके, ये सारे एक दूसरे से डिराइव किए हुए हैं, इसलिए किसी भी कोई भी अप्रोच यूज करेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, q इज द चार्ज, q स्क्वायर b स्क्वायर r इज द रेडियस दैट वी हैड कैलकुलेटेड अपॉन 2 into m is the mass. So you use any formula, you will get the same answers. अब जो आंसर हमारा आया है that is in joules. Okay, अब इसको अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, वो जो भी आंसर आया है उसको 1.6 into 10 to the power of minus 19 से डिवाइड कर देंगे. So you will get the required answer. Clear? So this is your next question. चलो next one, question number 5. What it says, there is an alpha particle is accelerated and moves in a vacuum tube with kinetic energy 10 mega electron volt. So energy is given, this is equal to 10 mega electron volt. It passes through a uniform magnetic field of 1.88 Tesla. So B is given 1.88 Tesla and traces a circular path of radius 24.6 centimeters. So R is given 24.6 centimeters. So this is equal to 24.6 into 10 to the power of minus 2 meters. Obtain the mass of the alpha particle. Okay, charge is given. Okay, so we have to find out the mass. Now you know that the energy, kinetic energy of the particle
charge particle which is performing circular motion in a uniform magnetic field is given by, it is given by kinetic energy E is equal to q square b square r square upon 2 into m. क्लियर? सो अब हम लोगों को तो फाइंड आउट करना है मास है, इसको इधर लेके चलेंगे. मास इज इक्वल टू q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2, e को इस तरफ लेके आएंगे. ओके, now simply put the values. So m is equal to what is the charge? Charge a q b r का whole square कर देंगे. Okay, charge is, this is the helium. Okay, so this will be 2 times of 1.6 into 10 to the power of minus 19 plus charge होगा ये. Okay, this is q. b is what? b is the magnetic field, that is 1.88 into r. r is what? 24.6 into 10 to the power of minus 2. इसका ये तीनों का स्क्वायर है, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2 into m, 2 into, okay, what is the mass? Mass is given, the mass is sorry, mass is to be calculated. Energy is given. The energy is 10 mega is 10 to the power of 6. Okay, electron volt is 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules. Okay, joules में लिखना जरूरी है. हाँ, तो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे. मेगा तो 10 to the power of 6 आ गया. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट? 1.6 into 10 to the power of minus 19 जूल. क्लियर? सो ये हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अब व्हाट वी कैन डू इज वी विल यूज द okay 1.6 to, okay, we will use log table and solve it, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को लॉग टेबल्स में यूज करना पड़ेगा. 1.88 into 24.6 इस सब का स्क्वायर है. ओके, इनटू ये क्या है अभी 10 to the power of 9 minus 19 का स्क्वायर इज 10 to minus 38, 10 to the power minus 2 का स्क्वायर minus 4. सो ये कितना हो गया? minus 38 minus 4, that is minus 42. क्लियर? अपॉन यहाँ पे क्या होगा? 2 into 1.6 that is 3.2. सिमिलरली इधर भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 3.2 सीधा सीधा लेंगे. So 3.2 into 10 to the power of 167 or minus 19, that is minus 12. क्लियर? तो अभी हम लोग इसका लॉग टेबल से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. क्या करोगे? ये सब का लॉग करो. हाँ, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड आउट द लॉग. इसके लिए क्या करोगे? 3.2 का, see this is square of this thing, no? So 2 into log of a plus log of b plus log of c. तो इन सबको ऐड करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? सो 3.2 का लॉग देखेंगे, 32 का 0, so 32 का 0 is 0.5051. ओके, पॉइंट एक डिजिट है ना, इसलिए 0.5051. ओके, इधर भी एक डिजिट है, सो 0.18 का 8 में देखोगे, 18 का 8, सो दिस इज 2742. क्लियर? इधर दो डिजिट्स है ना, तो 1.24 का 6 में देखेंगे, 24 का 6 में, so this is 3909. Okay, so 1 plus 2 3, 12, 2 point, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये स्क्वायर है ना, so this comes to 404. Okay,
माइनस, अब ये डिनोमिनेटर में ना 32 का जीरो मतलब 0.32 का जीरो में देखेंगे, 32 का जीरो कितना है 5051, 5051 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस कम्स टू 3, तो दिस इज 3.8353। अब क्या करोगे, इसका एंटी लॉग देखेंगे, क्लियर, एंटी लॉग देखेंगे 83 का 5 और 3 में मीन डिफरेंस, 83 का 5, 83 का 5 कितना आता है 6839, 6839 और 3 में मीन डिफरेंस दैट इज 5, 6844, ओके 6844। क्या करेंगे, एक के बाद तो डेसिमल पॉइंट होगा इनटू 10 टू द पावर ऑफ, ये जितना भी है 10 टू द पावर ऑफ 3, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 10 टू द पावर ऑफ 3, तो ये हो गया, और इधर कितना है -42 -12 दैट इज -30, -30 इंटू +3, हाँ, so this will be equal to 10 to the power of -27, okay, so the mass comes out to 6.844 into 10 to the power of -27 kilograms, okay, this is the mass, clear? So we can calculate the mass like this, okay. So next one, next one is question number 6. Question number 6 क्या बोलता है, there are two wires connected in a series circuit, okay, series circuit में connect किया है, मतलब क्या है, दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे दो वायर्स हैं, ओके, दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2, यहाँ से अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको कनेक्ट करने के बाद करंट इस डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, वी नो दैट द पैरेलल करंट्स they attract each other and anti-parallel currents or opposite currents they repel each other, okay, so now what we will do is what is the current flowing through each of them, 10 amperes, okay, what is given that current I1 is equal to I2, इसमें से जो करंट जा रहा है इसको I1 बोलेंगे, इसमें से जो आ रहा है वो I2, I1 into I2 which we will take as I, this is equal to 10 amperes, okay, current is flowing in opposite direction, separation between them is 8 millimeters, okay, so different distance D is equal to 8 millimeters, this is equal to 8 into 10 to the power of -3 meters, clear, and then AB, section AB is equal to 22 centimeters, this is section AB and this is 22 centimeters, so AB, this is equal to 22 centimeters, this is equal to 22 into 10 to the power of -2 meters. Now we have to find out the direction and magnitude of the magnetic field due to current in I2 and also the magnitude and direction of the force on wire 1, okay, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, we want to find out the magnitude of the magnetic field due to the current in this thing, current in the wire 2, okay, we know that the magnetic field due to an infinitely long current carrying conductor at some distance is equal to what, this is equal to mu 0 I upon 2 pi into r, okay, इसको हम लोग क्या करते हैं, म्यू 0 इंटू 2 आई अपॉन 4 पाई आर करते हैं, क्योंकि म्यू 0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू हमको पता है 10 टू द पावर ऑफ -7, so you will just put the values, this is equal to म्यू 0 अपॉन 4 पाई is 10 to the power of -7,
2 into what is the value of the current flowing through the second one? This is equal to 10 upon, ये तो ले ही चुके हैं हम लोग, r is the distance. Okay, this one, this is equal to what? 8 into 10 to the power of minus 3. So now we can easily find out 2 4s are 8 and this is 2 2s are 4, 2 5s are. So this is equal to what? 2.5 into 10 to the power of minus 7. This is minus 3. This is minus 4. So this is 2.5 into 10 to the power of minus 4 Tesla. This is the strength of the magnetic field due to this at this. Okay. So अब हम लोगों को डायरेक्शन पता करनी है. डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट बाय राइट हैंड रूल. इसमें क्या करते हैं हम लोग? वी पॉइंट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके, एंड द डायरेक्शन इन विच फिंगर्स कर्ल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, ये कैसा होगा? दिस इज परपेंडिकुलर टू इट and going into the plane of the plane. Clear? So and it is directed into the plane. Okay, जिस भी plane में हम लोग इनको इन दो वायर्स को रख देंगे उसमें perpendicularly it will be directed inside. Clear? So ये तो हो गया strength of the magnetic field. अभी हम लोगों को find out क्या करना है? What is the force experienced by this length? Okay, now we know that force per unit length of a current carrying wire due to another parallel wire, this is given by what? Mu 0 I1 I2 upon 2 pi d. Okay, so इसी को हम लोग क्या करेंगे? Mu 0 into 2 I1 I2 upon 4 pi into d. Clear? Now you just put the values. So you now put the values. This is equal to mu 0 upon 4 pi is 10 to the power of minus 7 into 2 I1 I2 दोनों में करंट कितना है? 10 10 upon what is d? What is the distance between them? 8 into 10 to the power of minus 3. So this will be equal to, this is 10, so this is 2.5 into 10 to the power of minus 7 into 1, this is minus 6, or 10 to the power of minus 3, that is minus 3. Okay, so this is the force per unit length. So this is these many newtons per meter. Okay, so therefore force on AB will be equal to what? 2.5 into 10 to the power of minus 3 multiplied by, what is the length? 22 into 10 to the power of minus 3. So this will be equal to, कितना हो जाएगा? 25 to the 50, 55, that is 55 into 10 to the power of minus 6 newtons. Okay. So this is 55 micronewton is the force experienced by this segment AB of that wire. Okay. So we will see the next one. चलो next one. A very long straight wire contains a current of 5.2 ampere. Okay, straight wire is there. What is the current through it?
This is equal to 5.2 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at a distance 3.1 centimeter from the wire? Okay, so what is R distance? R is equal to 3.1 centimeter. So this is equal to 3.1 into 10 to the power of minus 2 meter. So it wants us to find out the magnitude of the magnetic field. Okay, now magnetic field, we know that magnetic field due to an infinitely long wire is equal to what? Mu 0 2I upon 4 pi into R. Mu 0 I upon 2 pi R. Okay, so this is mu 0 2I upon 4 pi R. Now mu 0 upon 4 pi we know 10 to the power of minus 7 into 2 into what is the current? 5.2 amperes upon what is the R? 3.1 into 10 to the power of minus 2. दिया हुआ है सब कुछ. So what we will do is we will just multiply. 5.2 into 2 is 10.4 upon 3.1 into 10 to the power of minus 10, 10 to the power minus 2, that is 10 to the power of minus 5. इसको डिवाइड कर लेंगे 104 by 31. Okay, 93.93. Okay, so this is 17 5. So 3. This is equal to 3.35 into 10 to the power of minus 5 Tesla. This is the magnitude of the magnetic field. Okay, this is easy, straightforward. Just we have to put the values in the required formula and then we will get the answer. Okay, chalo, next one, question number 8. See what the question number 8 says. Current of equal magnitude flows through two long parallel wires having separation of 1.35 centimeters. Okay, so there are two long parallel wires. इनके बीच में separation कितना है? 1.35 centimeter. Force per unit length दिया हुआ है F by L. Okay, a distance of separation D is given. This is equal to 1.35 centimeters. That is equal to 1.35 into 10 to the power of minus 2 meters. Okay, then force per unit length, this is given. How much is this? 4.76 into 10 to the power of 2 or minus 2 into 10 to the power of minus 2 newtons. This is also given. So he is asking us to calculate the value of I. Okay. Now we know that force per unit length F upon L is equal to what? Mu 0 2 times of I1 I2 upon 4 pi into D. Okay. So this will be equal to mu 0 upon 4 pi is equal to what? 10 to the power of minus 7 into 2 times of I, and both are carrying the same current. So this, suppose I1 is equal to I2, this is equal to I, then this will be equal to I1 into I2 is I square upon distance of separation, that is 1.35 into 10 to the power of minus 2. Okay, so this will be equal to, क्या करेंगे? This F upon L is also given, so 4.76 into 10 to the power of minus 2. So therefore I square will be equal to what? 4.76 into 10 to the power of minus 2 into 1.35 into 10 to the power of minus 2 upon 2 into 10 to the power of minus 7. Clear? So this will be equal to, this will be equal to, क्या हो जाएगा? 4.76 into 1.35, okay, upon 2 into 10 to the power of minus 2 is minus 4. So this is minus 3 in the denominator, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा. Clear? This is equal to I square
अब इसको क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2.38 ये मिल जाएगा इंटू 1.35 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 238, ओके, दिस इज 832, तो क्या हो जाएगा 0, so this is 1 2 3 4 3.21 into 10 to the power of 3, okay, 3.21 into 10 to the power of 3, so इसको क्या कर देंगे, this can be written as 32.1 into 10 to the power of 3, this is I square, okay, but we want I, so therefore I is equal to square root of into 10 to the power of 2, so this will be equal to 32.1 into 10, yeah, so इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 32.1 का, ओके, लॉगरिथम से भी सॉल्व कर सकते हैं, so this is 5.67 है, 5.67 log से सॉल्व करना into 10, so this comes to what 56.7 amperes, okay. So this is how you can solve these problems. These are based straightforward on the formulas that we have studied in the topics that we discussed, okay. I hope you have understood this. All you need to do is, once you understand this, you need to solve these problems on your own, and then you have to practice some more problems also, unsolved problems, then you will get a better grip on them, okay. Thank you very much for viewing this video. We will discuss some more problems in the next lecture. Thank you.